Started his career as a regional secretary, East India of Sahityā Academy. Formerly, he was also a convener of Bengali Advisory Board of Sahityā Academy. He was also a president of Bharatiya Bhasha Parishad. He has retired as a director of publishing department, Vishwa Bharati. He is associated with a number of Bengali, like Little Magazine, whose writing mostly known in books from a great selection, like anthologies, literary, theory, history and criticism, contemporary fiction, classic fiction, poetry, and so on. So we are so fortunate and blessed to have him in this third literary festival as a moderator. We are so blessed, sir. Thank you. And move on to the next. Also, like it is privilege to call upon all the respected poets at each reader who will participate in this session. So I'll call out their name and also request them to kindly come up in the stage and take your seat. So may I call Drivendra Kumar Davis Sarji, please, sir. And get ready with Memento and Aronai. And next we have Arpan Chakrabarti, will be in Bengali version. And also we have Vijay Shankar Barman, sir, will be reading in Assamese. And may I call Santi Bosumatari, she'll be reading in Bodo version. Santi Bodo, okay, I've seen, I think. Anbar Ali, Malayalam, sir. We welcome you. And we have Manmohan Singh Sarji. Sir, please come on the stage. And also we have Dhananjay Singha, who will be reading in Rajbangshi language. Dhananjay Singha, I think. He couldn't turn up, I think. So with this, once again, I welcome all the artist reader participants of today's session. And also, I welcome each and every one of you, the distinguished, eminent writer, academician, educationist, dignitaries from different area, personalities, and also I welcome each and every one of you, the faculty, teachers, the students who are here to have enlightened with the new ideas and to listen to this session and attend this session. So I welcome each and every one of you and have a patience so that this session may go a very smooth and successful one. So I hand over to the honorable moderator to lead this session. So I call upon our sir to continue with his moderating. Sir, you can see. At the beginning, I see from there. Namaskar and very good morning to everyone. In this session, there are 5 eminent poets from different languages, and they will read out their poems. The first poem will be read in the original language, in the mother tongue of each poet, and then the translations will be read out either in Hindi or in English or in some other language. I am so happy to come here
because I worked with the Bodo people, with the writers in the Bodo language for nearly 10 years. Because Bodo was recognized by the Sahitya Academy, by the government of India in 2012. And Bodo comes under the Eastern Regional Office of the Sahitya Academy. So from 2010 to 2012, I was there as regional secretary, and at that time, I attended so many Bodo programs. I received nearly 30 to 35 arnais. So I have distributed all those arnais to my friends in Kolkata, so they know that this is a Bodo thing because I have given to my friends. Second thing, this place I have visited earlier also, this place, Gusaigaon, and some other places. And Northeast is a beautiful place, particularly this place, Kokrajhar. You have a beautiful river, you have forests, you have salt trees, you have agricultural land, and now you will see the golden rice field and all these things, paddy field here. So it's a beautiful place and the natural setting for literature. And thirdly, such festival should be held regularly, because we always feel, we always think that we are Bengali poets, we are Hindi poets, we are Gujarati fictionists, we are Nepali essayists. But actually there is only one thing, that is literature. In physics, there is no Bengali physics, no Assamese physics, no Hindi philosophy, nothing like that. There is only one subject, that is physics, chemistry, biology. Similarly, literature is one. We only write it in different languages. And in the festival, we once again clearly understand it, that we are sharing the same emotion. We are writing in different languages only. So this is the thing that these festivals, teach us. From the festival, we know each other, we know what our friends are writing in their languages, we take inspiration from them, and we enrich our own languages. Because I feel that the translators, they are also playing a very significant role in India. Because the translators, though they do not belong to the language, but they translate from the other language to one's own language. It means that he is connecting. There is one beautiful, there is Lachman Jhola. That famous bridge. And similarly, our translators are just Lachman Jholas. They are taking people from one place to another. So in this festival, I'm really happy that poets and fictionists from different parts of the country and also from outside have been invited. And yesterday we enjoyed a very colorful opening and so many other sessions. Today also there are some sessions, maybe at least 8-10 sessions. Tomorrow also there will be some sessions, and I do hope that we'll enjoy and carry the memory of Kokrajhar and the people of Kokrajhar also. That is also important. Not only the poets, the people who are living here, the young boys and girls who are supporting us, who are dancing, who are singing, they are also an integral part of this festival. So we'll remember them and we'll use the Arnai going back to our own places. There are 5 poets. Everyone will get 10 minutes. And six poets. Oh, please. Please come. So 6 poets. So you can read for 8 to 9 minutes. One poem in the original language. Thank you. And the first poet is Devendra Kumar Devesh, a very talented Hindi poet. He is the regional secretary of Sahitya Academy, Kolkata, an eminent translator. He has translated so many books from Bengali and other languages into Hindi. And so I am welcoming
Dr. Devesh to read out his poems. Thank you. We have one artist reader has been left out, and may I take this time to call upon Sir Dhananjay Singha to come on the stage and take your seat. So also we'd like to welcome with Aronai and with Momento. I think another, we have one participant, like Santi Bosumatari. Santi Bosumatari. Okay. Sir, I request to continue with this one. नमस्कार खुलुम भाई। कार्यक्रम देरी से शुरू हुआ है, इसलिए बहुत कुछ ना बोलते हुए सीधे कविता पढ़ता हूँ। यह कविता गुच्छ है, इसमें 5-6 खंड हैं। शीर्षक है सपनों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। पहला खंड, कौन आरोपित करता है हमारी उनींदी आंखों में इतने भयावह सपने। कौन आरोपित करता है हमारी उनींदी आंखों में इतने भयावह सपने, अवतरित होकर माता की कोख से भोगते हैं प्रत्यक्ष में संसार का जो क्रूर यथार्थ। उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर बुनता है जो हमारे सपने। आखिर क्यों नहीं चाहता वह कि कुछ पल के लिए भी लें हम किसी भी संसार से असंपृक्त होकर एक गहरी नींद। दूसरा खंड, सोई हुई आंखों के सपने शायद ही कभी होते हैं मनोनुकूल। सब कुछ भिन्न होता है प्रायः हमारी जागी हुई दुनिया के सपनों से। किस दुनिया के होते हैं ये सपने? कैसे रोकें हम इनकी घुसपैठ अपने अवचेतन मन से चेतन संसार तक। तीसरा खंड, यदि कभी कोई एक मोहक सा सपना तैर भी जाता है अनायास हमारी आंखों में, क्यों फिर उसे सहेजना, संभालना और ले आना हमारी इस जागती हुई दुनिया में होता है मुश्किल। अवचेतन से चेतन की यात्रा में क्यों खो जाते हैं हमारे सुंदर सपने। चौथा खंड, क्या कभी संभव है, क्या कभी संभव है कि सोते हुए देखें हम ऐसे सपने जो जागने पर खोए नहीं। शायद यह संभव नहीं, इसीलिए देखना चाहता हूं मैं जागी हुई दुनिया में जागे हुए सपने। पांचवा खंड, सपने कभी सच नहीं होते, सपने कभी सच नहीं होते कि कभी कभी सच भी हो जाते हैं।
पर सबके सब सपने शायद ही कभी होते हैं सच, और सपने जो हो जाते हैं सच होते हैं क्यों सच से भी भयावह। सपने जो हो जाते हैं सच होते हैं क्यों सच से भी भयावह, अथवा झूठ से भी सुंदर। कि चाहे जैसे भी हों, झूठ या सच, मोहक अथवा डरावने, सपनों की चाहत बनी रहेगी हमेशा। ये पहला कविता गुच्छ। और दूसरा कविता गुच्छ मैं देख रहा हूँ कि बहुत से यंग एज के बच्चे हैं, तो एक बहुत पहले मैंने अपने यंग एज में लिखी थी कविता, वो कविता गुच्छ, इसका शीर्षक है ऐ लड़की। यह भी 4-5 खंडों में है। पहला खंड, ऐ लड़की लोग मुझसे तुम्हारी बातें करते हैं। ऐ लड़की लोग मुझसे तुम्हारी बातें करते हैं, तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी मुस्कुराहट। करते हैं वे इंगित हमारे दरमियान संगति और सामंजस्य की तमाम संभावनाएं। चाहते हैं वे हमारे बीच कायम हो एक रिश्ता जिंदगी भर की सोहबत का। शायद वे नहीं जानते कि पड़ा हुआ है हमारे बीच झीना सा जो पर्दा, उसके पीछे, उसके उस तरफ तुम्हारा अपना एक प्यारा सा संसार है, जहां बिखरे पड़े रिश्तों के एहसास एकजुट हो जकड़ लेते हैं तुम्हें हर एक ऐसे क्षण में जब भी तुम पाती हो कोई अवसर उस पर्दे को हटाने का अथवा पर्दा पार की दुनिया में जाने का। दूसरा खंड, ऐ लड़की सोचता हूं मैं जब भी तुम्हारे और अपने बारे में, तो सोचता हूं उस रिश्ते की बाबत जो हम दोनों के परिचय से बना है हमारे बीच, और उस रिश्ते के बारे में भी जैसा यह दुनिया हमारे बीच सोचती है। सोचता हूँ एक तुम्हारी अपनी दुनिया, हम दोनों के मिलने से बनी एक और दुनिया, और दुनिया द्वारा गढ़ी हुई हम दोनों की एक अलग दुनिया। हर एक दुनिया बिल्कुल अलग है दूसरे से, पर हर एक में उपस्थिति है हमारी। सोचता हूँ करें हम एक साथ अथवा अलग अलग, आखिर तय तो हमें ही करना है कि हमें किस दुनिया में रहना है। तीसरा खंड, ऐ लड़की तुझे अब लड़की कहूं भी तो कैसे, अब तो बसा लिया है तुमने अपना एक नया संसार, समर्पित कर दिया है तुमने अपना वजूद, और समाहित कर लिया है किसी को अपनी दुनिया में। मैं जानता हूं हंसी खुशी स्वीकार किया है तुमने यह सब, पर नहीं जानता उस मानसिक तनाव, पारिवारिक खुशियों के दबाव या सामाजिक स्थितियों के बारे में जिनको शायद किसी झंझावात की तरह झेला होगा तुमने अपने इस फैसले से पहले। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कम अवसर पाए हैं फैसला करने के, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फैसला अंतिम नहीं होता। परिणति तो केवल एक और एक ही होती है फैसले की,
लेकिन अवसर अनंत होते हैं। मेरे फैसले की घड़ी अभी आई नहीं। चौथा खंड। ऐ लड़की, क्यों किया था फैसला तुमने मेरे साथ अपने गठबंधन का? जानकर मेरे बारे में, मुझसे मिलकर और बातें कर थोड़ी सी, क्या सचमुच परख लिया था तुमने मुझे पूरा का पूरा? क्या सोचकर रचाई थी तुमने अपने हाथों में मेहंदी, लगवाया था अपने बदन पर हल्दी का उबटन, डाली थी गले में वरमाला, 7 फेरों के साथ लिया था मुझसे वादा 7 वचनों का। चौक चौबारे और पूज कर कुल देव देवियां, रख कर व्रत उपवास और मन्नतें मांग कर तीर्थों की कष्टपूर्ण यात्राओं में गुहार लगाते हुए जिस वर की सैकड़ों बार की थी तुमने कामना, क्या मैं वही हूं? पांचवा और अंतिम खंड। ऐ लड़की, कैसे चली आई थी तुम थाम कर मेरा हाथ मेरे पीछे, विदा वेला में हंसते मुस्कुराते, माँ बाप, भाई बहन, बंधु बांधव, सखी सहेलियां, पास पड़ोस और गांव जवार जबरदस्ती रोने की करते हुए जबरदस्त कोशिश के साथ प्रतीक्षारत था दान की गई बछिया का करुण रुदन सुनने के लिए। बेटी विदाई के अवसर पर होने वाले पारंपरिक, बहुप्रचलित और सर्वापेक्षित विलाप को अपने होठों की मुस्कान में समेटकर किस भरोसे पर जज्ब किया था तुमने अपने भीतर? किस पर विश्वास था तुम्हें सबसे ज्यादा? अपनी प्रार्थनाओं पर, मुझसे लिए गए 7 वचनों पर, हथेली पर गहरे लाल उग आई मेहंदी पर, अथवा मुझे परख कर लिए गए अपने फैसले पर? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, Devesh. Our next poet is Sri Arpon Chakraborty. He writes in Bengali. With due permission of our respected moderator, I'd like to call out one more participant who has been left out. So I call upon Sir Dhananjay Tripura from Tripura to come up on the stage and take your seat, sir. So we'd like to felicitate him also with an Aronai and memento. As per the updation of program schedule, his name is not in the list, but we have got the updation, so I will call upon. Yeah, thank you. Kulumbai, Namaskar, good morning everyone. I am Arpon Chakraborty, a poet from West Bengal, Kolkata. I am an associate professor at Maulana Azad College. I teach Bengali language and literature. I used to write in Bengali. Today, I will be reading my Bengali poems and their English translations, translated by writer Rajat Chaudhuri. It's all from Bengali Poetry Underground. প্রথম বাংলা কবিতা, সেটা হচ্ছে গুজব। গুজব মিন্স রিউমার।
মাটির ভিতরে যা শিকড় ছড়িয়ে দেয় অল্প কিছু কাল, তাকে গাছ বলে। যা কয়েক দশক ধরে ছায়া আর আশ্রয়ের গল্প কথায় আমাদের ভুলিয়ে রাখছে, শিকড়ে অজস্র গ্রন্থি নিয়ে, তাকে বলে বৃক্ষ। যা কিছু উৎপাটিত হবে বলে একটি নির্মম হাতের প্রতীক্ষায় আছে, তা আগাছা। আর আমরা যারা এসব গুজবে খুব ঠান্ডা মাথায় বিশ্বাস রাখি, তারা মানুষ। Translation is rumor, that which spreads roots in the soil for a short while is called a tree. That which for some decades with myths of shadows and shelter keeps us engaged with numerous knots on its roots is an ancient tree. Whatever, expecting to be uprooted, waits for a merciless hand is weed. And we who, in very cold blood, keep faith in such rumors are human beings. পরের বাংলা কবিতা। এই পথ যদি। মেট্রোতে বসে বসেই মরে গেল লোকটা, নির্বিবাদে নিশ্চিন্তে মরে গেল। ঘুমন্ত নয় জানবার পর কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা ছোট ড্রয়িংয়ের খাতা পাওয়া গেল। সবকটি পাতা জুড়ে পাখি আঁকা, ওড়া বসা একগুচ্ছ একাকী সাদা কালো পাখি। পকেটের মোবাইলে দেখা গেল একটি মাত্র নাম সেভ করা আছে, পাখি। অহরাত্র লোকটি তাকেই করেছে ফোন, কল লিস্টে সেরকমই আছে। ফলত পাখি নামে মেয়েটিকে মৃত্যুর সংবাদ দিতে ফোন করা হলো। আর কি আশ্চর্য কাণ্ড! মেট্রোর সমস্ত কামরায় ডেকে উঠল পাখি, পাখিরা, পাখিদের সুর। সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীর মোবাইল থেকে রিংটোন হয়ে বাজতে থাকলো, বাজতেই থাকলো সমস্ত পাতাল পথ জুড়ে। পোয়েটিক জাস্টিসের মতো। এ পর্যন্ত অনুকরণীয়, এ পর্যন্ত দৈব নিয়তি। কিন্তু শুরুতে মেট্রোতে বসে বসেই যে মরে গেছিল লোকটা, বিশেষত নিশ্চিন্তে নির্বিবাদে মারা গিয়েছিল, উচ্চাসাবিহীন। ট্রান্সলেশন ইজ, if this road, he died sitting in the metro, died relaxed, unopposed. When it was clear that he was not asleep, from the bag across his shoulder, a little sketchbook was found, on every page of which were bird drawings, black birds on white, flocking, flying, perching, lonely. The mobile phone in his pocket had only one name saved on it, bird, Pakhi. Day and night he had been calling her. That's what the call list said. So to convey the news of his passing, they dialed the woman named Pakhi, and a strange thing happened. In all the metro coaches, birds began to sing, and from the mobile phones of everyone there, that bird song began to play ringtone-like, went playing all across that subterranean world like poetic justice. This much can be mimicked, till this much its destiny. But what about the beginning? That he died sitting in the metro, especially that he died relaxed, unopposed, unambitious. Thank you. Thank you, Arpan. Now our poet is Sri Vijay Shankar Barman. He writes in Assamese. In this festival, you have given a souvenir. There you will get details about all the poets. So I am not reading out all those things one again. In your bag itself, you will get the introduction.
about these poets. So Vijay Shankar Burman. Namaskar, Khulungbai. Myself, Vijay Shankar Burman. Basically, I write in Assamese, Ohomia, Bhashat Likho, Ohom Bhumire. Now, I am going to read one poem in my mother tongue. Ketetongor dudhari sokolo. Thuluka meghbor ulomi thake. Medur meghor major konobakhini tumi ahon pati sokolo tuka aru dihing boy. Lidur kola tilatut pura koila aru adha pura epat jutare andharot ne hirihor hukan thanir muga boronia eta pokhilar letat koni parisil mrityue. Muk akuhinia ketetongor sokolo dudhari patkar pani gosar pora নীৰৱে নিজৰি পুৰ হোৱা অংফিৰ সেই পবিত্ৰ পুখুৰীৰ পানীহে আছিল আৰু তাত হালধীয়া পখিলা এটাই আইনা চাইছিল. This poem has been translated by Nirendranath Thakuria as Streaming Tears of Ketetong. Bulging clouds are hanging. Amid the silvery clouds, sitting somewhere, you shed tears. And the dihing flows on, in the burnout coals on the black hillock of Lido, and in the darkness in a half-burnt shoe, or in the brown cocoon of a butterfly, on a dry twig of a cerise tree, dead, laid eggs. The streaming tears of Ketetong that scour me, oozing out of the water spout of the Patkai hills, was the water that filled the sacred ponds of Angpyo. And there, a yellow butterfly was peering at its image. विनोद रिंगानिया साहब, उन्होंने मेरा कुछ कविताओं का हिंदी ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया है. मैं एक औरत के बारे में जानता हूँ. मैं एक औरत के बारे में जानता हूँ जिसने एक अपाहिज बच्चा जन्मा था. मैं एक औरत के बारे में जानता हूँ जिसने एक अपाहिज बच्चा जन्मा था और दूसरा बच्चा पेट में रहते रेल की पटरियों की ओर सुबह के सैर के लिए निकली थी. वो लौटकर नहीं आई. अंतिम कविता. कवि. मरने के बाद भी वो अनलिखी कविता राग कुरेत्ती मुझे खोजती फिरेगी. हवा बांस के पोरे में अनफुटी आवाज के हृदय में मेरी सांस खोजती अंगुली मुड़कर रुकी रहेगी. नदी के तीर पर एक पतंगा बनकर कोस छूंघती फिरेगी. कविता के पृष्ठों को आईना समझ झुककर कुछ खोजना चाहेगी. रुकी रहेगी. मेरे सजे धजे घर की आराम कुर्सी पर एक बार भी नहीं बैठेंगी. सिर्फ दिमक की तरह सुरंग खोद हृदय में दिमक का घर बनाएगी और बारिश रुकने के बाद मुझसे मिलना होगा चोच सर मटकाती निकल आएगी.
मेरा सहधर्मी हाथ नीली रगों को खोजता निकल आएगा। हो सकता है कई कविताएं आए और जाए। मेरे मृत्यु के बाद भी कविता मेरे रक्त मांस की देह को खोजती बेचैनी से घूमती फिरेगी। जंगल के दलदल में निशान एक सफेद फूल झरेगा। ओए मेरे प्राण पोखर के कवियों, कविता से कहना अनदेखा वो फूल मैं ही हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। Assamese literature has a very strong tradition of poetry. And the most popular poet in Assam is Shankar Deva. His songs are sung in the Vaishnava Satras. His plays are enacted. And his poetry is read out throughout the state. And there are such great poets as Navakanta Bodua, Hiren Bhattacharya, and so many poets. Devkanta Bodua and our Vijay Shankar Burman belongs to that tradition. Thank you, Vijay. And now Shanti Bosumatari. Shanti has come? Perhaps not. Then Anwar Ali from the Malayalam language. Respected brothers and sisters, first of all, I am very much thankful to come here again. I was here 2 years back also. Thank you for the invitation. First of all, I am going to recite two poems. It's something like a twin poem. Title is the general title is Made Poems. One poem wrote first, then in a point of view of a person, and the second one in the point of view of other person inside the poem. First poem, the train where you fell asleep. I will mix up with Malayalam and English, so I try to experiment also. നീ ഉറങ്ങിപ്പോയ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി മെല്ലെ. I stepped out gently from the wagon where you entered. അന്തിജോടതയിൽ കരിവൺ അനങ്ങ. The steam train rolls into the lonely, blushing dusk. നായകൾ ഒന്നിച്ചു മൂങ്ങുന്നതുപോലെ വീലു ഞരങ്ങുകയായി. Its wheels creak like a pack of dogs howling. ലോകമെമ്പാടുമേ തീപിടിക്കും പോലെ ചൂളം മുഴങ്ങുകയായി. Its whistle sounds like the whole world is on fire. നീ ഉറങ്ങിപ്പോയ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയ നേരം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു നിൻ സ്വപ്നത്തിനുള്ളത്തിൽ ഗൂഢമായി ഞാൻ വച്ച സ്നേഹം. As I stepped out from that wagon where you slept, my love for you that I planted secretly in your dream exploded.
ആയിരം ചോരച്ച ചീളായി ചിതറി താരാവൃതാകാശമായി. 1,000 bloody shells scattered into a star-studded sky. This is the first poem. The second one is in the point of view of the person who left behind in the train. The train where I fell asleep. ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയ തീവണ്ടി. ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് മിണ്ടാതെ നീ ഇറങ്ങിപ്പോയി. You snuck away silently from the train where I fell asleep. തൊണ്ടയിൽ വിങ്ങുന്ന ദീർഘശ്വാസം പോലെ വണ്ടി അനങ്ങിത്തുടങ്ങി. The train started moving like a deep sigh throbbing at the throat. ഉള്ളിലിരമ്പും സുരംഗത്തിലേക്കത് മെല്ലെ ഞരങ്ങിത്തുടങ്ങി. Into the echoing tunnel within, slowly it creaked along. ഏകാന്തത പേയിളകുമൊരോളിയിൽ ലോകം ഇരുട്ടിത്തുടങ്ങി. The world is falling dark with a rabid howl of solitary lunacy. നീറങ്ങിപ്പോയ രാവണ്ടി എന്നെയും കൊണ്ട് മടങ്ങും നിമിഷം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു തീ എഞ്ചിന്റെ ചുണ്ടത്ത് ഗൂഢമായി നീ വച്ച സ്നേഹം. The moment the night train from which you stepped out started to return with me, the love that secretly planted on the lips of the engine exploded. The love you secretly planted on the lips of the engine exploded. ആയിരം ലോഹച്ചറങ്ങളായി ചിന്നി താരാവൃതാകാശമായി. 1,000 ferrous smears scattered into a star-studded sky. This is translated from the Malayalam by Aparna Thomas. Another very small poem. So I don't know if it became a poem. This morning I wrote it. In the strong winter, I feel like intolerable, cold. So I wrote 4-6 lines. But it's not only about the winter in Kokrajhar, the winter all over the country. Kokrajhar, 28 January 2024. കൊല്ലും തണുപ്പത്ത് ചാകുവാനാവില്ല. കട്ടിക്കരിമ്പടം കൊണ്ടു മൂടുന്നു നാം നമ്മളെ, നമ്മിലെ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രത്തെയും. An instant translation by myself. Kokrajhar, 28th January 2024. Killing winter, but we cannot surrender to death. Killing winter, but we cannot surrender to death. With thickened black blanket, we cover ourselves and the free nation within. With thickened black blanket, we cover ourselves and the free nation within. Thank you. Thank you, Anwar Ali ji. You have come a long way from Kerala to this place, and
as Malayalam belongs to the Dravidian family. And in this part, usually it is Indo-Aryan or Sino-Tibetan. So here, your presence has added a different language group in this festival. Now, Manmohan Singh, a very eminent Punjabi poet. नमस्कार, सत श्री अकाल, खुलम बाय. First of all, let me to do namaskar to this land where our first Guru, Guru Nanak Dev, has visited this place when he traveled from Dhaka to northern side, and he met Shankar Deva. And our ninth Guru, Guru Tegh Bahadur Sahib, came, and there is a Gurdwara in Dhobdi. So, मैं इस धरती को नमस्कार करता हूँ. अपनी कुछ पोइम्स मैं पंजाबी में एक आध पोइम आपको सुनाऊंगा, फिर उसकी कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशंस, एक आध पोइम का हिंदी ट्रांसलेशन सुनाऊंगा. As the theme of the festival is the roots and how the native narrates. My first poem is Neelkant. So, the Punjabi original version of this Neelkant is: ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾਗ ਡੰਗਦਾ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਮੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੌਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੀਲੀ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀਲੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਫਰਸ਼ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸਾਰੀ ਨਿਲੱਤਣ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਉੱਠਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਠ ਨੀਲਾ, ਕਾਇਆ ਨੀਲੀ, ਸਰਬ ਆਲੋਕ ਨੀਲਾ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਸਿਰਜਣੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਵਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਅਰਧ ਕਾਇਆ. ਜੇ ਸਾਗਰ ਰਿੜਕਣਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾਗ ਲੋਕ ਕੋਲ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ. ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਨਾਗ ਡੰਗਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਵਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ. ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਉਦੇ ਨੀਲਕੰਠ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਉਦੇ ਨੀਲਕੰਠ. So, the English version of this poem, Neelkant. While sleeping, a snake bites me. A hole drills into my forehead. Poison runs from feet to nail. My bed cover gets blue. Then the 4 bed posts. Ultimately, whole floor turned bluish. A Shiva emerges from this blue background, whose throat is blue, whole hue is bluish. He says, if you want to create a Bhagirthi,
then you have to go to the Himalayas, near the Gangotri, where no Parvati exists, either there or your half body. If you want to churn the sea, then you have to live in the world of snakes, near the Sheshnaga, where each snake has its own tail. If a snake bites you while sleeping, then get up and come with me, where there is no Shiv or no Parvati. Only poison is there, which you have to drink like nectar. Then the Nilkant will emerge from you. Then the Nilkant will emerge from you. So, there is another poem. I will recite the English version of this, Seeking Shelter. So many Buddhas exist there in his home. So many Buddhas exist right there in his home. There is no need to go out to the forest for nirvana. In an alcove in the home is placed a big-bellied laughing Buddha to keep away the evil spirits. So many slender, elongated Buddhas are placed on the mantelpiece to wish him an auspicious journey before he steps out of the abode. So many more Buddhas lost deep in meditation, one calm and lost in thought beneath the peepal tree, another sitting in sad reflection of the rivulet, yet another silent of seeing sorrows of many hues. Beside these, there is also a sleeping Buddha who knows it all even in deep slumber. Often she awakens the Buddha in my being, turning the wheel of the universal ideals to tell me of the Four Noble Truths. She also explained to Rahul the mysteries of the middle path. But Rahul and I have never listened to her. In fact, so often we disturb her attention and interrupt her long patience. She is not Yashodhara of the palaces, nor the beggar woman of Buddhist refuge. She roams not in the faraway jungle, nor does she leave the home. Yes, she does the dedicated practice for which I leave my home and earth. So simply, she has attained salvation without making a show or sound. Her silence echoes the ultimate wisdom. Go to Buddhas for shelter. Go to truth for refuge. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Another point, the Hindi version of I will narrate. It is, last year I lost my father. So, it is a very personal experience. So I will narrate the Hindi version of this poem. इस कविता का नाम है कपाल क्रिया,
हिंदू राइट्स में हम सब करते हैं, कपाल क्रिया। बचपन में क्रिकेट खेलते हुए जब पहली गेंद पे हो गया आउट तो पिताजी ने पीठ थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, दूसरी पारी में जोर लगाना। सच माने, मैंने दूसरी पारी में अच्छी दौड़ें बनाई। 11वीं में जब हो गया फेल, 11th क्लास, 11वीं में जब हो गया फेल तो पिताजी ने पीठ पलोसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेहनत करो, दूसरी बार हो जाओगे पास। सच्ची मैं बड़े अच्छे नंबरों से हो गया था पास अगले साल। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया तो हो गया रिजेक्ट। तो एक बार फिर पिताजी ने गले से लगा के कहा, कोशिश करते रहो, अपने आप कहीं बात बन जाएगी। सच मानिएगा, दूसरे साल मुझे कहीं बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई। पिताजी के बोल थे मेरे लिए भीष्म पितामह जैसे। पिताजी के जाने के बाद जब ले गए उनको अंतिम स्थान और लिटा दिया एक चबूतरे पर और होने लगे अनुष्ठान, पंडित ने संकेत कर कहा, यहां उल्टा घड़ा तोड़िए। पूरे जोर से मारा जमीन पर घड़ा, मगर नहीं टूटा। लगा जैसे पिताजी कह रहे हों, दूसरी बार कोशिश करो। सच जानिएगा, दूसरी बार घड़ा टूट गया पूरी तरह, चिपर चिपर। पिताजी जब चिखा पे पड़े थे चुपचाप, तो हो रहे थे अग्नि में क्षण क्षण अलोप। पंडित ने एक बांस मेरे हाथ में देते हुए कहा, वो सर देख रहे हैं ना, जोर से मार कर तोड़ दीजिए और बांस को चिखा के उधर फेंक दीजिएगा। वैसे ही किया, पर देखा पिताजी का सर साबित था। देर तक खड़ा रहा पिताजी की लट लट बलती चिखा के पास। ऐसे लगा जैसे कह रहे हो, सॉरी यार, जीवन में कई बार कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका दूसरी बार नहीं होता, जिनका दूसरी बार नहीं होता। एक और पोइम है, उसका हिंदी वर्जन सुना रहा हूं मैं। चींटियों का समाजशास्त्र, द सोशियोलॉजी ऑफ एंट्स। बाहर निकलती हुई चींटी क्या कहती होगी भीतर लौटती चींटी को? शायद वही जो उसने कहना बताना होगा हर मिलने वाली चींटी को। बाहर निकलती हुई चींटी क्या कहती होगी भीतर लौटती चींटी को? शायद वही जो उसने कहना बताना होगा हर मिलने वाली चींटी को। कितनी लय और निरंतरता होती है चींटियों की चाल में, इतनी सहजता कहां से लाती हैं? मग्न रहती हैं सह अस्तित्व में, कितना सहचार है इनमें। जानती हैं सिर्फ प्रेम और हमदर्दी ही नहीं काफी, भरोसा और सहयोग का रिश्ता भी जरूरी है। सिर्फ प्रेम और हमदर्दी ही नहीं काफी, भरोसा और सहयोग का रिश्ता भी जरूरी है। चींटी की बुद्धि संसार के सभी जीवों से प्रखर, सूक्ष्म तंतुओं से
पर आदमी की बुद्धि से शायद कमतर, तभी तो जहर नहीं उसके पास जितना मनुष्य के पास है। अपनी नस्ल से किया जितना धोखा मनुष्य ने, शायद ही किसी और प्राणी ने किया होगा अपनी जाति के साथ। कितनी सहजता से जीती हैं, देखा है कभी भोजन के जुगाड़ में लीन कैसे मदद करती हैं आपस में। अपने से भारी मृत चींटी को कैसे लाद कर ले जाती हैं बेगर्ज। कितना विस्मयकारी है, कितना अद्भुत है चींटियों का समाजशास्त्र, चींटियों का समाजशास्त्र। धन्यवाद। Thank you, Manmohan Ji. Manmohan Ji is a very renowned poet, fictionist, critic, and translator. He has received Sahitya Academy Award also. We are thankful to him that he has come here, attended this festival, and read out his poems. Now Dhananjay Singho. Dhananjay belongs to the Rajbangshi language. Sahitya Academy has published an anthology of Rajbangshi folk tales, folk songs, riddles, etc. You can collect the book from the book fair. Rajbangshi is a very rich language, and I welcome Dhananjay to read out his poems. Namaskar, Dandabod, Khulumbai. Good morning, everybody. Honorable moderator, sir, honorable poets, and my honorable audience. I'm Dhananjay Sinha. I'm at secondary Kokrajhar sub-division district. I belong to Rajbangshi community. My mother tongue is Rajbangshi. Now I am going to recite two Rajbangshi poem with its translation. My first poem, Prokiti. পাহাড়গুলোর গাছগুলায় ঘর বানায় আপনা আপনি নিরিবিলি কোনো দেখভাল না লাগে গাছক আকাশে এক ঝাঁক চৌকের জল দিয়া ভিজে দিলে যৌবনের গান জুড়ে গাছগুলায় হালিয়া জ্বালিয়া পক্ষীগুলাও গাছের চিরকালের সখী পক্ষীগুলের গাছগুলের প্রতিদিনের সাগাই গাছগুলের উমরা আসি বইসে গাছের নাকারি ঘরত গাছেও মিঠা ফল বিচি দিয়া করে সাগাই সদরের আদর আপ্যায়ন পক্ষীয়ে বিনিময়ত গাছগুলেক দে সবুজিয়া আরেক না পাহাড় প্রকৃতি এমন করিয়ায় আপন ভোলা মায়া ভরা উমরা মানসিক দিবার চায় শান্তির ছায়াতল চিরটাকাল ও কৃপণ হাতে ও কৃত্রিমভাবে ঋতুর পাছত ঋতু ধরি ঝর্ণার কলকলানি শীতল ধারা অহর অথচ আমার পাপী চোখ মনে প্রতিদিনে প্রকৃতি করে দলবদ্ধ ধর্ষণ নির্লজ্জ পশুর মতন প্রকৃতিয়ে কান্দে একলায় আড়ালত আমার অন্ধ লালসার বিটকাল অট্টহাসিত হায় আসলে আমরা যে হারি যাং প্রতিদিনে দুঃখ তো ওইটাই বন্ধু যেটা আমরা হয়তো করিরে পামো না জয় কোনোদিনে কোনোকালে Now I'm going to recite this English translation of this poem, Prakriti. My friend Sandip Chakraborty has been translated it.
The nature, the trees settle their abode in the hills, spontaneously and quiet. They don't need to rear, soaked fully with the sky's tears. They dance and sing song of youthful years. Birds also are the eternal friends of the trees, and they are guests of every day. They come and sit in their shade. The trees also welcome them with fruits, seeds, their best way. The birds, in return, dedicates the trees another hill of greenery. Thus, self-oblivious, magical as the nature is, offers man with perennial soothing shade. With unsparing hands, unceremoniously, they give season after season, coming and cool fountain stream. But our dirty minds and eyes of distrust violate nature with shameless brutality. Silently, nature weeps in our terrible laughter of lust. My second poem, এক না মধ্যবিত্তীয় স্বপন, সুখী দাম্পত্য জীবন, এক না নাসুয়া স্বপন, এক বেটা, এক বেটি, এক সুন্দরী শিক্ষিতা মাইয়া, সবল ব্যক্তিত্বর উষা আয়ের ভাতার, এইটাই আমার জন্য এক স্বর্গীয় স্বপন, যার জন্যে আমরা সিনেমা দেখি, সিরিয়াল দেখি, রঙিন যৌনতাময় প্রসার জলের মতন করি পিয়া খাই। অথচ অধরা না পোয়ার আগুনত জ্বলি থাকে আমার স্বপনের সুখী দাম্পত্য জীবন। রুক্ষতার আদর ভরা বাস্তবের এই জীবন, কাটা ভরা ক্যাকটাসে যেটায় সাজায় একখান রসহীন মরুদ্যান। সুখের ঠিক নেউটকেইতেই জীবনে হারায় উইয়ার মুক্তা খচিত শোয়ে শোয়ে ক্ষণ অনুক্ষণ। সুখের সুরগুলা হতাশার গানগুলে মাত্র আমার হয় প্রতিদিনের উৎকেশ নিঃকেশের সম্বল। কড়ির সন্ধানত নয় পাশের এন্দুরের দৌড়, শিকারী জীবের মতন করি শুঙি থাকি সদায় লাভের অঙ্কের আধরা অপরঞ্চি। সন্তান, শিক্ষা, পেশা, বিলাসী বাহন, বিমা, ঘরের ঋণ, পেনশনের প্ল্যান, প্রেসক্রিপশন, উপজন দিন, বিয়োর বার্ষিকী, পেট্রোল, ইন্ধন, নেটপ্যাক, 5G সিম। বগলের সাগাইয়ের দায়, নিরুপায় স্বজন তোষণ। এমন মেল্লা ভেল্লা সমস্যার ছন্দ পয়ার দিয়া রচিত আমার 108 নামের সংসার শতনাম। কংক্রিটের কারাগারত বন্দী প্রতিদিনের ব্যস্ত জীবন যাপন, হায়রে মুক্তির বাও নেওয়া সেই কৈতর জোড়ার মতন করি নাশ হয়ে যে তবুও আমরা গুলে সুখের এক সিমটে আদর। অভিনয় দক্ষ আমরা গুলায় খালি করং পরস্পরের সম্মুখত মুখত রঙের প্রলেপ দিয়া অভিনয় সুকৌশল। মুখত থাকে খই ফোটার মতন করি আমার টিয়ার রাও। হয় ঠিকই আছি আমরা, যাতনা শূন্য আমার এই সুখের নিউক্লিয়র নিটোল জীবন, আমার এই চিরসুখের সুখী দাম্পত্য জীবন। Now it's English translation, translated by my friend Shandip Chakraborty. A middle class dream, happy married life, an untouched dream, pretty educated wife, daughter and son,
husband with a fat salary, a macho man. This for us is a heavenly dream. For which we watch movie, serial, series, and gulp the colorful sensual ads, yet remains burnt. In the fire of inadequacy and wants, our dream of happy married life, till the end of our story of strife. Blessed with aridness, this transient life, where oasis decorated by cactus rigorous. Alas, life loses its beautiful golden moments, countless. Running after our definitions of happiness, the songs of happiness and of despair are only ours. Capital of daily breath, red race for money, so grows like predator we sniff always. Leftover of profit and loss, children, education, career, lucrative job, luxury car, insurance, housing loan, pension plan, prescription, birthday, anniversary, petrol, fuel, netpack, 5G SIM. Responsibilities of kith and kin. Nepotism for the helpless, inflicted with numerous problems. Is our names of hundreds and eight sansar, perennially busy life in the concrete prison, always bound or reach the air of freedom. We excel in hollowing acting with different hypocrites, different marks, with popcorn sounding. Yes, we are fine. Like the parrot talking. This is our painless nuclear life of road. Thank you for listening my points. Thank you, Dhananjay ji. And now our last poet in this session is Dhananjay Tripura. He will read his poems in the Tripura language. Khulumbai to all, respected chairperson of this August function, and ladies and gentlemen. I thank respected Dr. Dimas Musari sir and organizer for inviting me to this prestigious literature event. As we know, Tripura language is a language from Tripura state, a sister language of Bodo group. And linguistic George Graha Abramson mentioned it different language in his book Linguistic Survey of India, Volume 3, Part 2, Tibeto-Burman Family, Bodo Group, Tripura. Now I am going to recite poetry in my mother tongue, Tripura language. First poem name, Hofreng. Mia ani dongorimang bai kerayo, silai aro baji kokma khorango, tini ibuti khorango aro kiriliang, tabok ani langmani belairok pungi tanggo, Sobani kok sujogi, mangtangni kok thero, habsini hor ongoi, akhogi phainani nayo, batang phur. Tabuk ani kirima silai aro bajini hopring hai, ijang hagok layo, asuk thayo sarjagi,
Iro tabuk muikathungkai asailia. Uri khuktibai wasre jagai busli chopa ongkha. Bisi katal ani bagai tubi phaya mungsabo tongthukmani kokton. Muito sming khlairugo jaiti masa kamajakmani kokno. Aro bisi saiseni blok sisi kokdumano. Tabuk aichukni novah bai silai aro baji kokmani bakhai. Sajagi phaido ani kongthai kore kore nova koborni loge ani kha sabai tongthaujagya muito manimang orakma krei silai aro baji perma khorangno tabo sakni thuilamrok sutungjagbaikha chamung lomuni mangabai ani mukti kukruk unglia wau kafro tuisatirmo kosol kosagoi thango khuri sakati sring bari sring a few lines for all in English. Spark. Yesterday, my dearest dreams broke and fell at the blast of guns and bombs. Today, I do not fear such noise because the lips I have sown and throat I have woven. 3 clouds of resistance. Another story taught my insights and silently roared with anger. A fuming volcano, its molten lava, erupting intermittently, gushing spasmodically. Now my fears like spark of gun and bombs, directionless, dispersed, and all round me fall. Now the vegetables do not grow here beneath the earth, by up terminates. The seeds have gone sterile. The new year does not bring me good tidings. It only reminds me of a race lost gone ago, and nearly forgotten. The gentle breeze before dawn that bring me the burnt smell of guns and bombs, irreverently mixed with eager stormy winds. The noise of guns and bombs have denuded my soul. There is no daily happiness for me. I feel the famine around me. Now on this protruding being, even my tears have become soil like sparkling water sullied by unfeeling peaks. They trickle down my lap, stingly, very stingly. My another poem, Hankrukmani Ganti. Ani hukni mai kata sama panago, narwayongai phai majakha, paranirwaja, dabing, aro karbari. Luko besergo khumta kanrugai, ano kharwairanani bagai, khatung khajaklai, kutung laija hu arini lukurok. Panani paithago phai sopaikha, mailungma, kholungma, aro hasukma. Mai balama panani, mailungma ungai, tripura jagma. Khorok thok mutang, khogo kok mutang, warik sakai mini sago, hukni mai katal sagai. Hukni mai katal samani sagai khanargo, kami ausaisa. Guan subbuti sogai, salo ok phaiti matuma, aifuni laibajak koktuma. Tabuklai sagai sasni sabaya, unak burani, aliatugo, khamutang mutang, maidu sogai chalayo. Bolongni toksa tomli rok, khamri layu, eri rugo, sebrai rugo, hukatal ni maitang. Luku hukmu laruknai rokbo, maisam kolsani morok masia, lama bubrajak, khorok kitingjak, sorogno khatung laijak, hukatal go, tang bitini khorang, hankrukmani gantui, lasi jagai makhang phui jagai, chaprang baprang ungai, aifung. Rutuknai kurei kasabo hu katalni tangbiti khorang bajang kamai tongkha. Jatana hambai, thank you for being all. Thank you for this opportunity. Thank you,
Dhananjay Tripura. I thank all the poets who participated in this session. Sri Devendra Kumar Devesh, Sri Arpan Chakraborty, Sri Vijay Shankar Barman, Sri Anwar Ali, Sri Manmohan Singh, Sri Dhananjay Sinha, and Sri Dhananjay Tripura. I thank all the people present here today in the morning in this hall. I request the young boys and girls who are present here today to start writing poetry, because in future I like to see you reading your own composition from the stage. At that time I will sit in your chairs in the audience. So thank you everyone. Well, we come to the end of these sessions. Before that, may I take this some more an extra time to hand over a letter of appreciations to the participants. And with that connections, I once again request Honorable Moderator, Sir, to hand over a letter of appreciation to all the artist reader participants. So I'll call the respective names, and Sir will hand over the letter of appreciations. First of all, Devendra Kumar Sarji. And next we have Arpan Chakraborty. Vijay Shankar Barman, sir. Next we have Anwar Ali, sir. Next we have Manmohan Singh, sir. Next, we have Dhananjay Sinha, sir. Last, we have Dhananjay Tripura from Tripura. So with this, well, ladies and gentlemen, as we come to the end of this session, I take this privilege to thank Governor BTC, especially the CEM Pramod Sarji, and all the associate officials for taking such an initiative, financially support and encouragement. And also, I'd like to thank and heartfelt gratitude to the respected moderator, sir, for today's ethics sessions, leading us into the ethics session, for moderating the sessions with most learned experience, enlightening us with more of his vibrant knowledge and ideas to everyone sharing different levels of soliciting the event. And also, I'd like to extend my gratitude to all the distinguished learned poets, ethics readers, who have been unveiling us with a new ray of understanding through your thoughts, presentations, imparting wisdom and knowledge, nurturing us with a new